गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है डी डॉलराइजेशन। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने क्लैरिफाई किया है अपना स्टैंस डी डॉलराइजेशन पर। कहा है कि जो रीसेंट पॉलिसीज़ आरबीआई ने ली हैं वो अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए लिए हैं रादर दैन कम्प्लीटली डॉलर से दूर होने के बजाय। ठीक है। तो ये अप्रोच से आरबीआई बैलेंस करना चाहता है ग्लोबल इकोनॉमिक रियलिटीज़ को और इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी सेफ गार्ड करना चाहता है। तो डी डॉलराइजेशन होता क्या है? डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या है कि आप अपनी जो डिपेंडेंस है यूएस डॉलर के ऊपर इंटरनेशनल ट्रेड और रिजर्व्स में वो कम कर रहे हो। तो ये जनरली जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से जो है वो जो डिज़ायर चलती है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की, उसके ही जो है बाद ये डी डॉलराइजेशन के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। तो आरबीआई गवर्नर का कहना है कि लोकल करेंसी ट्रेड करना, वॉस्ट्रो अकाउंट्स में ट्रेड करना, हम इससे डिपेंडेंसी ऑन यूएस डॉलर कम कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना पूरा जो है डॉलर का ट्रेड जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है। हम जो रिस्क आते हैं ओवर रिलायंस ऑन एनी सिंगल करेंसी, उसको कम करने के लिए हम ये जो है वॉस्ट्रो अकाउंट्स या फिर लोकल करेंसी ट्रेड जैसे एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। तो अब हुआ क्या देखने को मिल रहा है कि सेंट्रल बैंक्स जो है ग्लोबली, खासकर आरबीआई भी गोल्ड को ज़्यादा परचेज कर रहा है अपने रिवर्स रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने 2022 में लगभग 1136 टन ऑफ गोल्ड जो है वो एक्वायर किया है। अगर हम अभी इसी साल के अक्टूबर में देखें, आरबीआई ने 27 टन जो है गोल्ड अकेले खरीदा है, जो कि लार्जेस्ट है अमंग द सेंट्रल बैंक्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है। शिफ्ट जो है गोल्ड की तरफ क्यों हो रहा है? क्योंकि अनसर्टेनिटीज़ हैं, यूक्रेन वॉर हो या रशिया और चाइना के ऊपर जो सैंक्शंस लग रहे हैं, उसकी वजह से जो है गोल्ड का जो है वो एक सेफ बेट माना जा रहा है। ठीक है। डॉलर का शेयर जो है ग्लोबल फॉरेन रिजर्व्स में धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है और धीरे धीरे जो है वो चाइनीज़ युआन का जो है वो राइज देखने को मिल रहा है। एमर्जिंग मार्केट जैसे कि इंडिया, वो अल्टरनेटिव्स भी ढूंढ रही है डॉलर की रिलायंस के अगेंस्ट, ताकि जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिस्क जो कि करेंसी की किसी भी डोमिनेंस से होते हैं उनको ख़त्म किया जा सके या कम किया जा सके एटलीस्ट। इंडिया जो है वो ट्रेड करना चाहता है डोमेस्टिक करेंसीज़ में, रशिया और यूएई जैसी कंट्रीज़ के साथ ऑलरेडी कर भी रहा है। और इंटरनेशनल ट्रेड जो है रुपी के साथ वो ज़्यादा इतना नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ एक्सेप्ट द यूएस। ओके। अब हुआ क्या कि ब्रिक्स की कंट्रीज़ जो हैं वो एक शेयर्ड करेंसी को क्रिएट करने की बात कर रही हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उसके ऊपर बहुत सारे ग्लोब जोग्राफिकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। इंडिया अब जो है वो चाइनीज़ युआन में डील नहीं करना चाहता रशियन ऑयल इंपोर्ट्स में। ठीक है। जबकि युआन जो है वो धीरे धीरे ग्लोबली एक्सेप्ट हो रहा है। ओके। तो ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, डिक्लाइन हो रहा है डॉलर रिजर्व्स, उसकी वजह से सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट देखने को मिला है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इंडिया ने अपने रॉबस्ट रिजर्व्स तो रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी डॉलर की वॉलेटिलिटी हमको इम्पैक्ट करती है, इसलिए हम उसके ऊपर ज़्यादा विजिलेंट हैं। ओके। तो इंडिया एक कॉशियस अप्रोच फॉलो कर रहा है, जिसमें हम स्ट्रेटजिक बैलेंस बनाकर रखना चाहते हैं अपने रिस्क को मिटिगेट भी करने के लिए और ग्लोबल ट्रेड जो है स्टेबिलिटी भी मेंटेन रखने के लिए। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं म्यूल अकाउंट्स। टॉपिक इकोनॉमी और सिक्योरिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई ने अनाउंस किया है एक एआई पावर्ड मॉडल जिसका नाम है म्यूल हंटर डॉट एआई, जो कि जो इशू है डिजिटल फ्रॉड का म्यूल बैंक अकाउंट से, उसको एड्रेस करने के लिए बनाया गया है। तो म्यूल बैंक अकाउंट्स क्या होते हैं? म्यूल अकाउंट्स क्या होते हैं? बैंक अकाउंट्स जो कि क्रिमिनल्स इलीगल एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, उनको हम म्यूल अकाउंट्स कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जिनको डिजिटल लिटरेसी ज़्यादा नहीं है, टेक्निकल लिटरेसी ज़्यादा नहीं है, उनसे ये क्रिमिनल्स जो है पैसा देकर अकाउंट्स, उनके बैंक अकाउंट्स जो है वो ख़रीद लेते हैं, मतलब उसकी डिटेल्स ले लेते हैं और फिर उसमें डील करने लगते हैं। ठीक है। तो नाम किसी और का नाम पे वो अकाउंट होता है, उससे आपने पैसे दे के उसके अकाउंट डिटेल्स ले ली, उसका अकाउंट खरीद लिया आपने, उसको थोड़े से पैसे मिल गए गरीब इंसान को, है ना। आपने उससे पैसे देकर वो खरीद लिया और उसमें आप जो है वो इलीगल फिर ट्रेड कर रहे हो। तो इनोसेंट इंडिविजुअल जो है वो क्रिमिनल्स द्वारा ऐसे एक्सप्लॉइट हो जाते हैं और फिर जब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होने लगती हैं उन बैंक अकाउंट से, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वो इनोसेंट इंडिविजुअल जो है वो टारगेट हो जाते हैं। ठीक है। जबकि एक्चुअल क्रिमिनल्स जो है वो अनडिटेक्टेड रहते हैं। तो म्यूल अकाउंट्स एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट बनता जा रहा है ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स का इंडिया में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली लगभग 4.5 लाख म्यूल बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज़ किया और इन 4.5 लाख म्यूल अकाउंट्स में लगभग 40,000 जो थे वो एसबीआई के ही थे। ठीक है।
तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के जो सेक्रेटरी हैं वो आरबीआई से, फिर आई4सी, नाबार्ड और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक से मिले और उन्होंने डिस्कस किया कि कैसे जो इस डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड को रोका जा सके। तो बैंक्स को कहा गया कि आप एडवांस टूल्स का इस्तेमाल करो, एआई या फिर मशीन लर्निंग सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करो और अपने एम्प्लॉयज़ को भी फ्रॉड प्रिवेंशन और डिटेक्शन पर ट्रेन करो। आरबीआई ने अपना एक न्यू म्यूल हंटर सोल्यूशन भी जो है वो दिया है एनहेंस मॉनिटरिंग करने के लिए म्यूल बैंक अकाउंट्स की। तो इसमें कहा गया है कि अगर एकदम से एक कोई अगर अकाउंट अदरवाइज डॉर्मेंट पड़ा था लेकिन उसमें ज़्यादा पैसा एकदम से आने लग गया है, तो आप उस पर चौकन्ने हो जाओ कि ये म्यूल अकाउंट हो सकता है। आरबीआई ने जो है होस्ट भी की है अभी ज़ीरो फाइनेंशियल फ्रॉड्स की हैकाथॉन, जिसमें फोकस रहा है म्यूल अकाउंट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये म्यूल हंटर एआई इनिशिएटिव है क्या? तो आरबीआई के इनोवेशन हब ने जो है बैंक्स के साथ मिलकर एग्जिस्टिंग मेथड्स को असेस किया और फिर ट्रेडिशनल सिस्टम्स में देखा कि वो बहुत ज़्यादा फॉल्स पॉजिटिव्स दिखा रहा था। ठीक है, तो मतलब उसकी प्रोसेसिंग भी स्लो थी और जो नहीं भी है म्यूल अकाउंट्स उनको भी वो पॉजिटिवली म्यूल अकाउंट्स मान रहा था। तो आरबीआई ने क्या किया, ये म्यूल हंटर डॉट ए आई एक एआई पावर्ड टूल बनाया है ताकि एफिशिएंटली डिटेक्ट किया जा सके म्यूल बैंक अकाउंट्स को। एक पायलट टेस्ट भी कंडक्ट किया गया दो लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ, जिसमें कि प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स देखने को मिले। आरबीआई ने इसलिए अर्ज किया है बैंक्स को कि वो कोलैबोरेट करें आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ और एनहेंस करें म्यूल हंटर के यूज़ को। ठीक है, तो इसमें अंदर आपको एआई और मशीन लर्निंग पावर्ड सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, जिसमें कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जो हैं वो ट्रांजैक्शन डेटा और अकाउंट डिटेल्स को प्रोसेस करके क्विकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं मोर प्रिसाइजली कि क्या ये म्यूल अकाउंट है या नहीं। ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन जो है इलिसिट फंड मूवमेंट्स की म्यूल म्यूल अकाउंट्स में वो भी आइडेंटिफाई हो जाती है। ठीक है, तो एक तरह से एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम ग्रो जो फाइनेंशियल फ्रॉड है उसको डील करने में हम फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है वो चेयर पर्सनशिप मिली है इंडिया को 68 सेशन की यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग की। तो ये CND है क्या, प्रिंसिपल पॉलिसी मेकिंग बॉडी है यूनाइटेड नेशंस ऑन ड्रग रिलेटेड मैटर्स पर। तो ये ग्लोबल ट्रेंड्स को मॉनिटर करती है, सपोर्ट करती है मेंबर स्टेट्स को कि वो बैलेंस्ड पॉलिसीज़ बना सकें, ओवरसी करती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर इंटरनेशनल ड्रग कन्वेंशंस को भी। ठीक है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था बाय रेजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल 1946 में। 53 मेंबर स्टेट्स जो हैं इसके मेंबर हैं ऑफ कोर्स, और वो इलेक्ट होते हैं इकोसॉक द्वारा। हर साल मिलते हैं ये और ये कई तरह के डिसीजंस और रेजोल्यूशंस लेते हैं। हेडक्वार्टर इसका वियना में लोकेटेड है। तो ऐसा इसलिए इंपॉर्टेंट है इसको डिस्कस करना क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया जो है वो इस इंपॉर्टेंट यूएन बॉडी को चेयर कर रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नोवा। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोनॉमर्स जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के, उन्होंने एक फार अल्ट्रा वायलेट एमिशन को जो है वो डिटेक्ट किया है जो एक नोवे से आ रही है। फर्स्ट टाइम पहली बार देखने को मिली है ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी से। तो नोवा क्या होता है? नोवा एक स्पेशल क्लास ऑफ ट्रांसेंट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होता है जिसमें सडन अपीयरेंस होती है एक ब्राइट न्यू स्टार की, जो धीरे धीरे कुछ हफ्तों और महीनों में ख़त्म हो जाता है, फेड अवे हो जाता है। ठीक है, तो नोवा में क्या होता है कि एक बाइनरी स्टार सिस्टम्स होते हैं जिसमें कि एक अर्थ साइज्ड वाइट ड्वार्फ होता है जो कि एक सन लाइक कंपेनियन को ऑर्बिट कर रहा होता है क्लोजली। ये वाइट ड्वार्फ जो है इसकी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल से जो कंपेनियन स्टार का मटेरियल होता है वो ड्रॉ होने लगता है उसकी तरफ, और वो एकदम से जो है अपने सरफेस पर बहुत सारा मटेरियल गैदर कर लेता है। उसकी वजह से थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, और जब ये बहुत ज़्यादा ब्राइट जो है ये जब ये रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उससे सडन ब्राइट बर्स्ट विजिबल होता है जिसको हम नोवा कहते हैं, और ये अपनी मैक्सिमम ल्यूमिनोसिटी कुछ ही घंटों में रीच कर लेता है आफ्टर द आउटबर्स्ट। ठीक है, तो इस रिसर्च का सिग्निफिकेंस क्या है? इससे रिसर्चर्स जो है उन्होंने डिस्कवर किया है अल्ट्रा वायलेट एमिशन 42 नोवे से, और साइंटिस्ट को इससे हेल्प होगा कि वो बाइनरी स्टार सिस्टम जो हमारी नियरेस्ट नेबरिंग गैलेक्सी है उसको जो है वो स्टडी कर पाएँ। तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी, इसको हम मैसियर 31 या M31 भी कहते हैं, नियरेस्ट ये मेजर गैलेक्सी है मिल्की वे की। लगभग 5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है ये अर्थ से, और ये एक बार्ड स्पिरल गैलेक्सी है। ओके, जैसे हमारी मिल्की वे है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो है वो होस्ट किया जा रहा है प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। ये इंडियन चैप्टर है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का। ग्लोबल मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है जो कि डायलॉग फॉस्टर करता है पब्लिक पॉलिसी इश्यूज़ पर जो कि इंटरनेट से रिलेटेड है। 2021 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था ताकि मैक्सिमाइज की जा सके अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द इंटरनेट,
और ये प्रमोट करता है कोलैबोरेटिव डिस्कशंस अमंग रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, इंडस्ट्रीज, टेक्निकल कम्युनिटीज़, थिंक टैंक्स और इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस में। ठीक है, तो 14 मेंबर मल्टी स्टेक होल्डर कमेटी द्वारा ये सपोर्टेड होता है। एक वाइटल रोल प्ले करता है ये पॉलिसीज़ शेप करने में, एक ओपन, सिक्योर और एक्सेसिबल इंटरनेट की। ठीक है, सपोर्टेड होता है ये बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओके, तो ये एक्सप्लोर कर रहा है क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट गवर्नेंस, जिससे कि मीनिंगफुल डायलॉग किया जा रहा है और इंडिया अपनी लीडरशिप दिखा रहा है ग्लोबल डिजिटल लैंडस्केप में। एक सिक्योर, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल डिजिटल इकोसिस्टम कैसे हम एडवांस कर सकते हैं, उसके लिए लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। ठीक है, और एक और जो एक इंपॉर्टेंट इसका फोकस है वो रिस्पॉन्सिबल एआई की तरफ है, ताकि एथिकल और इफेक्टिव यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए किया जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, क्रॉन्स डिसीज़। ये टॉपिक भी सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रीसेंट स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें रिसर्चर्स ने एफिकेसी और सेफ्टी देखी है फिल्गोटिनिब की, जो कि एक जैक 1 प्रेफरेंशियल इनहिबिटर है। इसको थेरेपी में यूज़ किया जा सकता है क्रॉन्स डिसीज़ से अफेक्टेड पेशेंट्स पर। तो क्रॉन्स डिसीज़ क्या है? एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ होती है ये, एक क्रॉनिक डिसीज़ है, लॉन्ग टर्म कंडीशन मतलब, और ये इन्फ्लेमेशन करती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। तो ये कहा जाता है कि इम्यून सिस्टम के एबनॉर्मल रिएक्शन से हो सकती है, और जनरली ये चाइल्डहुड में, अर्ली अडल्टहुड में ये आपको देखने को मिलते हैं इसके सिम्टम्स। और क्रॉन की जो डिसीज़ है ये कभी भी डेवलप हो सकती है किसी भी एज में। ठीक है, और इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स रहते हैं आपके डायरिया, क्रैम्प होना, पेन होना एब्डोमेन में, एनीमिया होना, एपेटाइट ऑल्टर्ड होना, वेट लॉस होना। इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन थेरेपी से कम की जा सकती हैं जो इसके साइंस और सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लोनार लेक। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो एक प्रपोजल सबमिट करेंगे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, जिसमें कि फेमस लोनार लेक जो है बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट की, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाला जाए। ठीक है, तो लोनार लेक एक लगून लेक है बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। ये क्रिएट हुई थी ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ अ मीटियोराइट। अकेली ऐसी सलाइन क्रेटर लेक है ये वर्ल्ड में, जो कि एक मीटेरॉइड से बनी लगभग 50,000 साल पहले। और इसका जो वाटर है वो लगभग 7 टाइम्स सॉल्टियर है देन एवरेज सी वाटर। ठीक है, डायमीटर लगभग इसका 1.2 किलोमीटर्स का है, डेप्थ इसकी लगभग 150 मीटर्स की है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो है इसके कलर, जो कि चेंज होते रहते हैं, कभी ग्रीन कभी पिंक, डिपेंडिंग अपॉन द सीजन और वाटर कंडीशंस। ऐसा क्यों चेंज करते हैं कलर? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस वो डिफर होते रहते हैं, और वो सलाइन और एल्कलाइन एंड वाटर्स में अपने कलर चेंज करते रहते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is de-dollarization. This topic is important for your economy section. So RBI has recently clarified its stance on the de-dollarization trend, and it has stated that its recent policies are aimed only at diversifying risks rather than completely moving away from the dollar. Okay, so through this approach, the RBI is balancing economic realities or global economic realities while safeguarding India's financial stability. So why this clarification has come? This clarification has come because the US President elect Donald Trump threatened 100% tariffs against BRICS countries if they sought to reduce reliance on the US dollar in international trade. Okay, so de-dollarization refers to reducing dependence on the US dollar in international trade and reserves. Of course, it is driven by geopolitical tensions and desire for economic independence. So this clarification has come from none other than the RBI governor, who has emphasized that the recent measures like local currency trade agreements and Vostro accounts, they are aimed to reduce dependency on the US dollar, but they do not intend to eliminate the role of US dollar entirely. Okay, so of course the aim is to mitigate risks which stem from over reliance on a single currency for trade and reserves. So what is happening recently since the Ukraine war is that central banks globally, including the RBI, started purchasing gold to diversify their reserves. Global central banks in 2022 alone acquired a record 1136 tons of gold, and RBI alone added about 27 tons of gold in October 2024, which is the largest among the central banks during this period. So this shift to gold is basically driven by uncertainties like the Ukraine war,
and the fear of secondary sanctions, especially after seeing what the US did to Russia and China. So the dollar's share in global foreign reserves is witnessing a gradual decline, and it is being partially offset by the rise of Chinese yuan. Emerging markets like India, they are seeking alternatives to dollar reliance due to the geopolitical and economic risks associated with the currency's dominance. India is also encouraging trade in domestic currencies with partners like Russia and UAE so as to de-risk at least partially its trade ties. However, international trade in rupees has been limited because of India's trade deficits with the most countries except the US. Okay. So, what is the geopolitical context here? So, BRICS nations have been deliberating upon creating a shared currency, but this idea is facing challenges due to the geographical and economic diversity between the members. India has resisted using the Chinese yuan for Russian oil imports because we have economic sovereignty concerns. Uh, we are also witnessing that surging oil prices and declining dollar reserves caused social and political unrest in South Asian countries. So that's why India is already diversifying its reserves, and we are maintaining robust reserves, and we are ever vigilant about the dollar's volatility as well. Okay. So this is not something new. India is being cautious to manage dollar's reliance, and it is reflecting a strategic balance between India's approach to mitigate the risks while maintaining global trade stability. Okay. So the next topic is mule accounts. This topic is important for your economy section. So RBI has announced the creation of an AI-powered model named MuleHunter.ai, so as to tackle the growing issue of digital fraud involving mule bank accounts. So this mule bank accounts are used by criminals for illegal activities like money laundering or laundering of illicit funds. So what happens is that innocent individuals, typically from lower income groups or and those who have low technical literacy, they often sell their bank accounts and the details of the bank accounts, of course, to criminals who offer them money in return for the same. So these criminals start using those bank accounts of these poor people or innocent individuals, we would say, so as to avoid their own identity. So once this money laundering or the illegal activity gets caught in these mule accounts, the original target, uh, that is the in those innocent individuals, they become the targets of police investigation while the actual criminals remain undetected. So mule accounts have become a significant component in online financial frauds these days. Central government recently froze about 4.5 lakh mule bank accounts, out of which 40,000 were detected in various branches of SBI alone. Okay. So what has happened now? Department of Financial Services Secretary met with officials from the RBI, Indian Cybercrime Coordination Center, NABARD, and public and private sector banks to discuss the increasing challenge of digital financial fraud, particularly mule bank accounts. So banks were urged to use advanced tools and collaborate across institutions. Emphasis was also placed on employing AI and machine learning solutions for real-time mule account detection. Banks were also directed to train their employees on fraud prevention and detection. Banks were also encouraged to implement RBI's new Mule Hunter solution for enhanced monitoring. Okay, so experts have suggested that there should be limits on withdrawals from dormant accounts which suddenly receive large sums of money because it could be mule accounts. RBI is also hosting Zero Financial Frauds Hackathon with a focus on mule accounts only. Okay. So, what is this Mule Hunter AI initiative? So, RBI Innovation Hub worked with several banks to assess the existing methods for identifying and reporting mule accounts. However, the traditional systems were found to be showing very high false positive rates, and they were very slow in processing, so which led to undetection of mule accounts. So RBI developed this Mule Hunter AI, which is an AI powered tool to efficiently detect mule bank accounts. A pilot test was conducted with two large public sector banks and it showed promising results. So therefore RBI urged the banks to collaborate with the RBI Innovation Hub to enhance the Mule Hunter.ai model. Okay, so this model utilizes machine learning algorithms to process transaction data and account details, and this platform targets the identification of illicit fund movements into mule accounts, aiding the banks to identify the fraud effectively. Okay, so this basically highlights the importance of adopting advanced technologies to tackle the growing complexity and scale of financial fraud. Okay, so the next topic is UN Commission on Narcotic Drugs. This topic is important for your
Social issues. So recently, India has been chosen to chair the 68th session of the UN Commission on Narcotic Drugs. And UN Commission on Narcotics Drugs is the principal policy-making body of UN on drug-related matters. It is mandated to monitor global drug trends, support member states in formulating balanced policies, and also oversee the implementation of the major international drug conventions. Okay, so it was established by the resolution of the United Nations Economic and Social Council in 1946. So CND has 53 member states which are elected by ECOSOC. It is chaired by a bureau including one member per regional group. So it meets annually and it adopts a range of decisions and resolutions. Intersessional meetings are also convened throughout the year. Okay, and it is headquartered in Vienna. So this is the first time that India has been named to chair this important UN body. Okay. So the next topic is NOVA. This topic is important for your science and tech section. So astronomers from the Indian Institute of Astrophysics have spotted far ultraviolet emissions from novae for the first time in the neighboring Andromeda galaxy. What is NOVA? It's a special class of transient astronomical event which causes the sudden appearance of a bright, apparently new star, which slowly fades over weeks or months during their outburst. So nova occurs in binary star systems where a dense Earth-sized white dwarf star orbits closely to a companion star, which is like a sun. Okay, so when this white dwarf is orbiting this sun-like companion, the white dwarf's strong gravitational pull draws the matter from this companion star, and its accumulation on the of this material on the surface triggers powerful thermonuclear reactions. And when this reaction occurs, it produces a sudden bright burst visible as a nova, and this nova reaches maximum luminosity within hours after its outburst. Okay, so what is the significance of this research? So researchers have discovered ultraviolet emission from 42 novae, and this could help scientists to study these interacting binary star systems in our nearest neighboring galaxy at different phases of their life. Okay, so what is Andromeda galaxy? So it is also called Messier 31 or M31, and it is the nearest major galaxy to the Milky Way. It is about 5 million light years away from Earth, and it is like the Milky Way, it is also a barred spiral galaxy. Okay. So the next topic is India Internet Governance Forum. This topic is important for your governance section. So India Internet Governance Forum 2024 will be held at Pragati Madan, New Delhi. So it is the Indian chapter of the United Nations Internet Governance Forum, and it's a global multi-stakeholder platform which fosters dialogue on public policy issues related to the internet. It was established first in 2021, and the aim is to maximize the opportunities of the internet while addressing associated challenges and risks. So it promotes collaborative discussions among the representatives from government, civil society, industries, technical communities, think tanks, and industry associations. It is supported by a 14-member multi-stakeholder committee, and it plays a vital role in shaping policies for an open, secure, and accessible internet. Okay, so as to address the issues like cybersecurity, digital inclusion, data privacy, and emerging technologies. So what are the highlights of this year's forum? So it is supported by the Ministry of Electronics and Information Technology along with the NICSI. So it aims to explore the critical aspects of internet governance, fostering meaningful dialogue and highlighting India's leadership in the global digital landscape. So it will also address critical themes to advance a secure, inclusive, and sustainable digital ecosystem. This forum will also explore legal and regulatory framework to create balanced, growth-oriented policies that strengthen internet governance. Another key focus is also responsible AI, so as to promote ethical and effective use of AI for societal benefit. So the next topic is Crohn's disease. This topic is important for your social issues. So in a recent study published, researchers have assessed the efficacy and safety of filgotinib, which is a JAK1 preferential inhibitor, which can be used as a therapy in patients who have moderate to severe active Crohn's disease. So Crohn's disease is a type of inflammatory bowel disease. It is a chronic long-term condition which causes inflammation in the digestive tract. It is not yet clear what causes this disease, but experts suggest that it may stem from an abnormal reaction to the immune system. So Crohn's disease can develop at any age, okay, either in childhood or early adulthood. The most common symptoms of this disease include diarrhea, cramping, and pain in the abdomen, anemia, altered appetite, and weight loss. We do not have any cure for Crohn's disease as of now, but therapies can greatly reduce the signs and symptoms. Okay.
So the next topic is Lonar Lake. This topic is important for your environment section. So Maharashtra government is planning to submit a proposal to the Archaeological Survey of India so as to include the famous Lonar Lake of Buldhana district in the UNESCO World Heritage Site list. Okay. So this Lonar Lake is a lagoon lake in the Buldhana district of Maharashtra. It was created due to the impact of a meteorite. It is the only known saline crater lake in the world which has been formed by the impact of a meteorite about 50,000 years ago. Its water is about 7 times saltier than the average seawater. This lake has a diameter of about 1.2 kilometers with a depth of 150 meters. And one of the most striking aspect of this lake is its color, which changes from green to pink depending upon the season and the water conditions. Why does it happen? Because of the presence of microorganisms which thrive in the saline and alkaline environment of the lake. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.